So hi guys, a very good morning to all of you. This is Rahul Prajapati and I welcome you all for this webinar. सबसे पहले the topic that we're going to talk about today is how to identify the direction of a market using the option chain. Okay, logically, direction is again bit of difficult to identify for a market, but what are the key points or data points which we can see, and from using those data points specifically हम कैसे मार्केट का डायरेक्शन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट, राइट? वो हम आज सीखेंगे. Logically what we do is we generally, I take this whole session, so this is just a small part, one of the technique trading setups that I teach in my options trading, right, certification specifically. So not in a full, but it's just a small part of this. So how can we use the option chain to decide a market trend, right? So that's a part of it, right? So we'll show you how we can do that, right? So there are few key data points that we need to see. Okay. जो लोग very new to this market, the people who are very new to this market, for them need to explain what is the option chain, and then we'll move further. So अगर आप option chain study करते हो, option chain देखते हो, again, so just I'll give you a brief about it. सबसे पहले we can select the expiry. So let's go with the current expiry. Okay. Now see, so this is Nifty, right? So Nifty 10 February, tomorrow, right? So tomorrow expiry. Now we have a different strikes, okay, and then we have the option premium for both call and put, right? So this right hand side we will have the put data specifically, on the left hand side we have a call data, और ये जो price है आप live देख सकते हो. So this is a live price changing, right? Live feed is there. Plus, if you see that here we have the implied volatilities of all the strike price. You can see both the side, right, for call and put. Then we have a volume data also, okay, and then we have open interest and change in open interest in the same particular column. Okay, so this is the structure of the option chain. And if you see simultaneously, we have the option Greeks also here. Okay, so we have the option chain, we have the option Greeks in option chain also, right? So we can even identify what is the the different Greeks we have in the for that particular strike price, both column, right? So we have like vega also, gamma also, theta and delta also. Fine. So that simply we can just see, and we can see what are the data points that we need to see, and we can just study from here only. Okay, and it's live also. Okay. Now one more thing, that here what is that we will look for a fair price. Okay. Now generally what happens, this particular expiry 10th February, okay, the 10th February expiry, okay, generally does not have a futures, right? That means we have a futures for 24th February only, and we have weekly expiries. So generally we don't have a parity in between those futures and the in these expiries. So we have calculated a fair price. So basically this whole option chain for this expiry is, so this is a synthetic future, we can say. Okay, so this is a synthetic future for these options. Okay, this will be different from the last expiry, right? So just to understand and have a understanding about this thing. Okay, तो फ्यूचर प्राइस की जगह पे हम यहाँ पर आपको इस पे फेयर प्राइस दिखेगा, दिस एक्सपायरी के लिए भी आपको दूसरा फेयर प्राइस दिखेगा. ओके, अगर आप 17th वाला देखेंगे, दैट इज आल्सो वीकली एक्सपायरी, सो वो भी आपको फेयर प्राइस ही दिखेगा. एंड देन 24th वाला जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली, okay, let me just back, go to the 24th. Okay, so here you can see the futures price. Okay, so that's the addition you can get.
Now, this is the one thing that we generally see. Now, logically, if the most important data that we see is, this in this option chain is open interest, right? Open interest का जो data होता है और change in open interest, this is one of the most important data as an option trader we need to see. Okay. Now, logically, what we need to see is where we have the highest value. Okay. So on immediate basis, if I see, I can see that 17,500 call option has the highest open interest, right? That is 79 lakhs, and 3 lakhs has been added today. Now, if you see, change in open interest happened more in this particular strike price. There was 67 and 16 lakhs has been added today only. Okay. And here also we have a huge addition, that is 14,000. So now what they are doing, so we study this whole chain, option chain, from the seller's perspective. Seller के perspective से हम इस option chain को study करते हैं. Okay. And on the downside, if you see, यहाँ पर अगर हम देखें तो 17,400, 17,300 एंड 17,200, इस पे अप्रोक्सीमेटली आपको ये 50, 48 और 43 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा लाख का. ओके, सो एंड दीज आर द एडिशंस, राइट? Generally, if I say, we have the highest on 17,400 only. So that's a support for a market as well. And we have one on 17,000. So that's a bit far as of now, but immediate support tends to be 17,400. On the upside, we can say this 17,500 is the resistance. So as of now, this is a small range we are looking for. So if market moves above 17,500, so we are having a breakout, right? Okay, till like so we have addition across all the strike prices, right? So if market moves up, there will be some unwinding happening. Okay, so that is the thing. नीचे की तरफ जाएगा तो market 17,400 का level break करेगा, तो we will have 17,300, then 200. So by this you can identify the the different support and resistance for the market specifically. Okay, now that is the one thing. Plus what you can have here is just one more thing for this tool. So you can simulate this price, and by using few data points specifically. So an option premium is basically affected by three major factors. पहला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन का प्राइस 3 फैक्टर से इफेक्ट होता है. तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया? आपका अंडरलाइंग प्राइस. ओके, दूसरा पॉइंट हो गया आपका टाइम. तीसरा पॉइंट हो गया आपका implied volatility से चेंज होता है. ओके, नाउ सी, अगर हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखिए, अभी हमारा 17,400 का प्रीमियम इज 51 रुपीज. ओके, नाउ इफ आई चेंज दिस प्राइस, say I increase by 100. Okay, so whatever will the change happening in that particular call option will be shown here. So there is a 100 rupees change, and this strike price move up by 44 points. Okay, so we will get to know what will be the change in this specifically what will be my premium if there is a XYZ change in your premium. Sorry, your underlying price. Okay, underlying price में जितना भी चेंज होगा, आपका ऑप्शन किस वे से रिएक्ट करेगा आपको पता चल जाएगा. टाइम स्पेंड होगा, तो अगर एक दिन आपका खत्म हो जाएगा तो आपका प्रीमियम कल क्या बचेगा वो आपको यहाँ पता चल जाएगा, राइट? एंड देन वी हैव इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेंज होता है 10, 12, 15% जितना भी है, तो आपका प्रीमियम इतना रहेगा, राइट? So you can change these value to identify what is your option premium likely to be. Okay, यहाँ तक एक introduction हो गया. Okay, that means we know what is option chain, and we know what are the crux result of this, right? So just to understand this thing, option chain को इस तरीके से हम study करते हैं. Option studies, option chain के अंदर specifically open interest का data जो बहुत important होता है वो हम देखते हैं. Generally अगर हम वहां पर स्टडी करते हैं तो that becomes a bit difficult to read that data, the numbers specifically. But अगर हम यहाँ पर देखें, open interest का data we are studying, right? Now if you see 17,400 call option is there, 500 is there, 600 is there, 700 is there. So across all strike price you can see there is addition happening. 17,300 might have shown an unwinding, lot of unwinding, right? So that was the thing. So you can see that hollow portion on the upside of this call option. That means market moved up. So these people have probably shifted to these levels, right? Okay.
पुट साइड में भी आपको एडिशन दिख रहा है यहाँ पर. ओके, फाइन. सो लुकिंग एट दिस डेटा यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द मार्केट ब्रेथ स्पेसिफिकली, कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरफ ट्रेडर है. बट अभी हमने डायरेक्शन नहीं डिसाइड किया. डायरेक्शन के लिए हमें 2-3 डेटा और देखना पड़ेगा. सो आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा जब स्टडी करते हो तो यू कैन गेट टू नो कि हु आर एडिंग एंड वेयर वी आर एडिंग लॉट ऑफ पोजीशन स्पेसिफिकली. ठीक है, तो जहां पर पोजीशन ऐड हो रहा है आपका, वो लेवल्स आप देख सकते हो एंड उससे एक आइडिया लगता है कि मार्केट का रेंज क्या रह सकता है इस एक्सपायरी. ओके, नाउ अगेन वी हैवंट टॉक्ड अबाउट the understanding of finding the direction from these kind of data. Okay, now logically एक सिंपल वे डिसाइड करते हैं. पहले 2-3-4 तरीके हैं उसको डिसाइड करने के. तो मैं पहला तरीका बताता हूँ आपको कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ट्रेंड यूजिंग दिस ऑप्शन चेन. ओके, नाउ सी, if you see this particular option chain where you can see the highest data on the green bars or on the red bars. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके ग्रीन बार्स हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं. ओके, एंड रेड बार्स में भी है बट इतना ज्यादा नहीं जितना ग्रीन बार में. सो सीधा सीधा यहाँ पे अग्रेशन किसका दिख रहा है? कॉल ऑप्शन सेलर्स का. ओके, कॉल ऑप्शन सेलर्स का अगर अग्रेशन ज्यादा है, अग्रेशन मतलब दे आर सेलिंग अग्रेसिवली, जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है दे आर सेलिंग वेरी एग्रेसिव, उसमें काफी ज्यादा एडिशन हो रहा है. तो दैट मीन 17,400 का जो लेवल है यहाँ पर बहुत ज्यादा एडिशन हुआ है. ऑलमोस्ट 17 लाख का एडिशन हुआ है. दैट मीन्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट मार्केट शुड नॉट ब्रीच दिस लेवल एज ऑफ नाउ. मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट? और अगर आप ऊपर देखोगे 17,500 पे भी काफी अच्छा एडिशन हुआ है, 17,600 पे भी काफी एडिशन हुआ है, 700 पे भी, 800 पे जाके आपको अनवाइंडिंग दिख रहा है. दैट मीन्स दैट्स फार. अभी तो अगर आप 4 लेवल्स भी देखोगे 17,700 तक, तो हर 100 लेवल के ऊपर एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. That means if they are selling these options, that means someone wants that market 17,400 के ऊपर ही ना जाए. There are people who are bit taking less risk, so वो चाह रहे 17,500 पे कि मार्केट ऊपर ना जाए. So they are selling that strike price. और ऊपर चले 17,600 पे भी कुछ लोग हैं जो उसको सेल कर रहे हैं, 17,700 पे भी कुछ लोग हैं जो उस ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, राइट? That means सबका कन्विक्शन अपने हिसाब से है and they are taking these trades. Okay. Now if we see on the put side, we have the addition on this one also. There is a strong addition. And then 17,200. But if you see this, the bars of put is smaller than the call. ओके, पहला तरीका. तो अगर आपकी कॉल ऑप्शन ज्यादा है, अग्रेसिव है, दैट मींस कि कॉल सेलर्स का एंटिसिपेशन मार्केट के रिलेटेड ज्यादा है. तो दैट मींस अगर कॉल सेलर ज्यादा हो रहे हैं मार्केट में, सो मार्केट माइट कम डाउन. ओके, मार्केट माइट कम डाउन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर ऑल ऑप्शन सेलर्स हैं तो दे आर थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट? अगर यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है और अगर मार्केट 17,400 के नीचे ट्रेड करने लगता है और अनवाइंडिंग हमको दिखता है, दैट मींस पुट ऑप्शंस आर नॉट होल्डिंग, पुट ऑप्शन सेलर्स आर नॉट होल्डिंग देयर पोजीशंस. सो दैट मींस इन दैट केस मार्केट में मूव फर्दर. तो 17,000 तक का लेवल मार्केट फिर वापस दिखा देगा अगर ऐसे गिरने लगा मार्केट यहाँ से, right? So logically if we see, we have a, just by looking at the option chain का डेटा यहाँ पर, you can identify that कि मार्केट का जो अगर अग्रेशन है वो किसकी तरफ से ज्यादा है. तो अगर कॉल सेलर ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, that means market is not likely to be bullish as of now until unless we see a huge breakout. Okay. और पुट साइड में ज्यादा एडिशन नीचे नहीं हो रहा, 1-2 स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है, उसके बाद 17,000 पे सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है. तो बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ, ये जो बार्स है आपके, सबसे ज्यादा बार एडिशन कहाँ पर हो रहा है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर, कॉल में. ओके, एंड एडिशन की वजह से प्रॉब्लम मार्केट वोंट टेक अ रेजिस्टेंस इन दिस केस, राइट? तो बाय लुकिंग एट मार्केट हैव टू टेक द रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा मार्केट में एडिशन हो रहा है लेवल्स का, राइट? ओके, सो दैट इज द थिंग. द नेक्स्ट वी हैव इज लाइक कि डाउन ट्रेंड में ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर नीचे ट्रेंड करने लगेगा. तो वो डेटा जो हम क्या कहते हैं ऑप्शन चेन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, सेम we can do here also by studying this. So logically अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ आपको अग्रेशन देखना है किसका है. अगर अग्रेशन बायर्स का ज्यादा है, कॉल ऑप्शन सेलर्स का ज्यादा है, तो मार्केट में कम डाउन. और जब मार्केट बुलिश होता है तो मोस्टली पीपल सेल द पुट ऑप्शंस, राइट?
सो अगर पुट ऑप्शंस का लेवल बढ़ने लगा या ओपन इंटरेस्ट वहां पर एडिशन होने लगा, दैट मींस there is a chance that market seems to be bullish. I hope that is clear, right, for the first thing. Okay, so पहला तरीका ये, अगर कॉल ऑप्शन ज्यादा अग्रेसिवली सेल हो रहा है तो मार्केट इज बेरिश, पुट ऑप्शन ज्यादा सेल हो रहा है अक्रॉस ऑल दी स्ट्राइक प्राइस, दैट मींस मार्केट इज बुलिश. ओके, पहला तरीका ये हो गया. सो दैट इज सिंपल, राइट. तो सिर्फ आप इस चार्ट को देख करके स्टडी कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट थिंग. नाउ सेकंड इज विल गो टू द पुट कॉल रेशियो. Now, if you see this thing, 7th February, we have a 0.666, 0.70, that was the open interest. And on it, it's for 0.79. And if you see on 9th February, it's 0.888. So logically, what is put call ratio here is, what does that mean specifically? So the open interest of all the puts, okay, divided by the call option. Okay, so here if the value is below 1 as of now, so what does that mean? अगर वो वैल्यू 0 के नीचे है, ये रेशियो 0 के नीचे है, उसका क्या मतलब है as of now? कि जितना आपका कॉल पुट ऑप्शन सेल हो रहा है, राइट, उससे ज्यादा कहीं आपका कॉल ऑप्शन सेल हो रहा है, क्योंकि it's just a simple calculation if you understand this thing. So if I write it here, you can see put call ratio. Okay, so that means so let's say it's 1000. Okay, 1000 is the open interest of a put option. Okay, and let's say this is 1200 for the call option. Now this ratio cannot be greater than 1 as of. So it should be less than, let's say, I'm just taking a normal example, let's say it's 4.888. Okay, fine. So that is the thing. So now logic, if you see, few days back this value was 0.69, then 0.76, and then 0.8. So last 3 days what is happening? This ratio is increasing. Okay, that means there is a sign that put option sellers are going aggressive, a bit aggressive. Okay, but still not higher than the call option by traders, right, sellers specifically. तो जो कॉल ऑप्शन सेलर्स हैं वो भी सेल कर रहे हैं, पुट ऑप्शन सेलर्स भी ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो रेशियो बढ़ रहा है. तो पुट कॉल रेशियो, अगर पुट कॉल रेशियो में पुट ऊपर की तरफ है और कॉल नीचे की तरफ है, तो या तो पुट का डेटा बढ़ रहा होगा बहुत ज्यादा, इसलिए ये रेशियो बढ़ रहा है. न्यूमिनेटर इंक्रीज होगा तो आपका जो आपका रिजल्ट होगा वो इंक्रीज होगा, या फिर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो न्यूमिनेटर अपने आप ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा. तो दैट मींस यहाँ पर आपका ये रेशियो बढ़ेगा. तो इस लास्ट 3 days इफ यू सी द ओपन इंटरेस्ट इज फॉर द पुट साइज इन इंक्रीजिंग, राइट. बट अभी भी 1 से ऊपर नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ गारंटी नहीं देंगे कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है यहाँ पर स्पेसिफिकली. बट पुट कॉल रेशियो द सेंटीमेंट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट. ओके, सो लोग ट्रेड किस तरीके से कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन मिलता है यहाँ. फाइन, अर्लियर इट हैज लाइक मोर देन 1 also. ओके, सिंपल सा लॉजिक क्या है यहाँ पर कि पुट कॉल रेशियो देखने का लॉजिक ये है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ घट रहा है और करंटली आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है वहां पर, तो दैट इज माइट कुड बी अ बुलिश साइन. वहां से बुलिश साइन हो सकता है, बट अभी भी स्टिल कॉल ऑप्शन सेलर्स आर हायर, जैसे कि हमने ओपन इंटरेस्ट में भी देखा. तो कॉल ऑप्शन का अगर आप एग्रेशन लेवल देखोगे तो सब पर वो बहुत ज्यादा पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, राइट. तो पुट कॉल रेशियो हमको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बता रहा कि क्या है exactly sentiment of the market. But let's say this suddenly rises to 1.5 or like 1.2 or 1.5. So here what happens is basically कि आपका पुट ऑप्शन बहुत ज्यादा राइट हुआ है. तो पुट ऑप्शन अगर आपका राइट हुआ, दैट मींस मार्केट बुलिश है ऑलरेडी. और अगर आपका कॉल, सो दूसरा ये भी हो सकता है कि कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग होना शुरू हो गया, तो आपका वो बढ़ गया. फाइन, सो दैट इज द सेंटिमेंट इंडिकेटर. आप ये भी आइडेंटिफाई करके आप देख सकते हो. ओके, नाउ लॉजिकली now let's come to the important point कि actually हमें अगर मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करना है तो कैसे करना है. So we have studied the option chain. Option chain होता क्या है? Then we studied the
द ओपन इंटरेस्ट स्पेसिफिकली, और वहां पर हम अपना बाय अंडरस्टैंडिंग दैट कि कौन सा आपका किसका पावर ज्यादा है ऑप्शन चेन के अंदर, जब आप देखोगे तो देख के बाहर से पता चल जाएगा कि हु इज मोर अग्रेसिव। ओके, सो दैट इज द थिंग। देन वी स्टडीड द पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो से आपको आइडिया लग सकता है मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अंटिल अनलेस इफ इट इज ट्रेडिंग नियर वन, दैट मींस इट्स न्यूट्रल एज ऑफ नाउ। ओके, now the next thing is what we're going to talk about here is actually what are the data points we need to see now by using the option chain also. So we'll be using the option chain also. Okay, so logically what we need to find here is this. First of all, we need to understand the underlying structure of the market. So आपको underlying को भी study करना पड़ेगा. Okay, now if you see here, market is going up, Nifty is going up from last 2 days. But if I see the open interest is decreasing from last 2 days as of now. Fine. So market is going up, open interest decreasing. That means we have a short covering problem. Okay, market is just going for a short covering. That means nobody is buying it actually. Okay. So यहाँ पे अगर आप आईवीज जाकर के देखोगे अपना ऑप्शन चेन के अंदर, तो वो भी 18 से कम होकर के 15 के आसपास आ गई. Okay. So logically, there are 3 components we have seen. पहला आपका open interest, second आपका price movement, and third is IV. Okay, IV generally market के बढ़ने पे बढ़ता नहीं है, but that's not the only relationship we know. Okay, ऐसा भी होता है कई बार कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपका IV बढ़ जाएगा. Okay, so मार्केट का डायरेक्शन अगर आपको डिसाइड करना है तो 3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज कि अगर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट में अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है निफ्टी में, दैट मींस पहला कंडीशन ही खराब हो. ओके, सो अगर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट इज द फर्स्ट साइन. अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट मींस यू कैन गो फॉर अ बुलिश साइन हियर. पहली चीज. सेकंड चीज जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसका आईवी. अब मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, तो आईवी नहीं बढ़ना चाहिए मोस्टली, बट मार्केट में अगर मूव ज्यादा हो तो आईवी बढ़ जाता है. कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है जिसकी वजह से आपका आईवी बढ़ जाता है. तो ओआई अगर फ्यूचर्स में इंक्रीज हो रहा है, आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका आईवी भी बढ़ रहा है, तीनों चीजें बढ़ रही है, तो दैट्स अ बुलिश साइन. ओके, so I'm writing here, if your OI अगर आपका OI इंक्रीज हो रहा है, आपका IV इंक्रीज हो रहा है, अंडरलाइन अपने आप बढ़ ही जाएगा यहाँ पर. तो अगर ऐसा है तो दैट मींस दैट्स अ बुलिश है. ओके, ये चीज है. तो दैट मींस अगर मार्केट का स्पेसिफिकली बुलिश साइन निकालना है तो OI इंक्रीज होना चाहिए. ओके, अंडरलाइन का प्राइस बढ़ना चाहिए. जब ये दोनों हो रहा है तो दैट मींस आपका यहाँ पे क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप है. ये वाला अगर आप पोर्शन देख रहे हो और ये वाला पोर्शन देख रहे हो, तो ये क्लियरली आपका क्या है, यू नो, बुलिश साइन है, बिकॉज आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप का साइन यहाँ पर शो हो रहा है. साइमल्टेनियसली अगर इसके अंदर आईवी का तड़का भी लग जाए, कि अगर आपका आईवी भी बढ़ने लग गया, तो लॉजिकली आईवी मार्केट के ऊपर जाने पे बढ़ता नहीं है, मोस्टली बहुत रेयर होता है ऐसा. तो जब भी बढ़ेगा दैट्स अ बुलिश साइन. ओके, तो अंडरलाइन भी बढ़ रहा है, आपका ओआई भी इंक्रीज हो रहा है और आपका आईवी भी इंक्रीज, दैट मींस देयर इज अ बुलिश साइन इन द मार्केट. क्लियर, पहली चीज. दूसरा इसका डाउन साइड पे देखिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओआई आपका फिर से बढ़ना चाहिए. ओके, आपका ओआई इंक्रीज होगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, तो आपका सो लॉजिकली मैं यहाँ पे इस पॉइंट को डाल देता हूँ. पहले ओआई इंक्रीज होना चाहिए एंड आपका अंडरलाइन ओआई इंक्रीज होना चाहिए, अंडरलाइन डिक्रीज होना चाहिए. जब ये दोनों कंडीशन होती है तो शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है स्पेसिफिकली. बट यहाँ पर भी आईवी बढ़ना चाहिए. आईवी बढ़ गया तो दैट मींस अगेन अ साइन दैट मार्केट इज लाइकली टू कैच दैट ट्रेंड. आई होप ये एक सिंपल सा कोड है जिसको आप ध्यान में रख करके अंडरस्टैंड कर सकते हो.
ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन आप तीन तरीकों से ढूंढ सकते हो। सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया दैट वाज किसका अग्रेशन ज्यादा है। अगर कॉल राइटर्स का अग्रेशन ज्यादा है दैट मींस मार्केट कुड बी अ बेरिश, मार्केट कुड ट्रेड इन द बेरिश टोन फर्स्ट। ओके, सेकंड आपका क्या है साइन इसमें, सेकंड इसका साइन हमने जो देखा वो दैट वाज कि आप पुट कॉल रेशियो से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा घटेगा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पुट कॉल रेशियो से आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ओके, थर्ड इज लास्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ओआई बढ़ रहा है और आपका प्राइस बढ़ रहा है, दैट्स द बुलिश साइन, प्लस उसमें आईवी का तड़का लग जाए तो दैट मींस दैट गिव्स यू अ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार यहाँ से मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसा कभी बहुत रेयर होता है, मैंने आपको ये चीज बताया ना कि इंक्रीज आईवी इंक्रीज होगा, बट यू विल सी दैट सम टाइम ओके कि आपका आईवी भी इंक्रीज हो रहा है, फाइन, दैट इज द साइन। ओआई इंक्रीज हो रहा है और अंडरलाइन डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और यहाँ पे आईवी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट मींस स्पेसिफिकली यहाँ पर आपका डाउन ट्रेंड है, सो दैट्स अ बेयरिश। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है बट आई भी बढ़ नहीं रहा, तो आई भी नहीं बढ़ रहा, दैट इज, सो दिस इज नॉट द वे दैट वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ अ मार्केट, बट we know that if there is a long happening in the market and IV is also increasing, that will fire up that move specifically. Okay, और डाउन ट्रेंड में अगर OI शॉर्ट बिल्डअप और वहां पर IV बढ़ना शुरू हो गया, that means market will start showing a huge moment in that case. तो उसकी वजह से आपको अपने डायरेक्शन का पता चल जाएगा, क्योंकि IV देख करके आपको डायरेक्शन नहीं पता चलती। हाई IV shows that there will be huge moment in the market. ओके, बट मुझे पता है शॉर्ट बना हुआ है मार्केट में, दैट मींस शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा है, दैट मींस मार्केट में ये चीज थोड़ी डाउनसाइड हो सकती है। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये एक छोटा सा तरीका है, यहाँ से हम मार्केट का सेंटीमेंट डिसाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज किए हुए। ओके, सो ये चीज यहाँ पर नहीं खत्म होती अगर हमने, सो दिस इज व्हाट वी डू स्पेसिफिकली। अगर आपने इसके बाद फर्दर जैसे इसके आगे हम जो क्या करते हैं, वी विल डिसाइड स्ट्रेटजीज हाउ टू पुट ऑन दीज व्यूज, राइट। सो ये सारे व्यूज अगर हमने निकाल लिए इसके हिसाब से, so what we do after that in what I teach in the certification is that, so उसके बाद which strategy to be implemented, how to identify a stop loss and target in that case. Okay, तो ये सारी चीजें हम उसमें आकर के इसके आगे देखते हैं। Okay, so that's a very simple way to identify a trend of a market just by looking at this three four data, and you can have a fair understanding about the market. Okay, तो आपको ऑप्शन चेंज स्पेसिफिकली देखते रहना, जैसे 15 अगर आपका ऑप्शन चेंज में आई भी बढ़ रहा है, 15 से 16 17 हो गया एंड बोथ आर इंक्रीजिंग, आपका फ्यूचर्स ओआई बढ़ रहा है, आपका स्पॉट भी बढ़ ही रहा है, दैट मींस स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुलिश साइड। ओके, एंड सेम विद गोज ऑन द डाउन साइड। क्लियर, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, राइट। सो जो आपका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था, सो दिस शुड बी ऑलवेज, दिस इज लाइक दिस ओनली। ओके, सो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी जस्ट ओनली, so we have different another trading setups, right? So again, the people who are very new to this market, so we have this whole course as a, so I'll show you. Okay, so this is your curriculum. So we have a different curriculum. So specifically somewhere in between, when we talk about open interest, I share this way to identify a trend of a market, and then we will decide कि market में जब स्ट्रैटेजी लेना है आपको तो कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहिए। सो लॉजिकली मैंने आपको कितनी बार बताया कि मार्केट का फोरकास्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। अगर आपका मैथमेटिकली स्ट्रैटेजी काम नहीं करता तो फोरकास्टिंग पे इतना दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट यू कैन डू इट विद एनीवन, बट स्टिल अगर हम उसको डेटा पॉइंट से बिल्डअप करते तो हमारा कन्विक्शन उसमें इंक्रीज होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो हमने एक सिंपल सा स्टडी किया कि ऑप्शन चेन को देखा, मार्केट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, उसके आपसे एक बुलिश स्ट्रैटेजी प्लेस कर दी, बेरिश लग रहा है तो बेरिश स्ट्रैटेजी प्लेस कर दिया, and that too by maintaining the risk and reward. Okay, so that is the thing. So this is the simplest way, this is one part of the way to identify a trend of a market. There are other ways. There are just by looking at the call option OI, put option OI, we can even identify that. And just again, that's why I'm not sharing more in this, because of that, because that not required that much.
उसकी जरूरत ही नहीं है इतनी, बिकॉज इसके बाद अब क्या करोगे, यू विल ट्रेड दिस एनी हाउ। तो ट्रेड के लिए आपको स्ट्रैटेजी आना चाहिए, व्यू बनाना नहीं। ओके, अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत भी छोटे से हंच के साथ एक पॉसिबिलिटी देता है कि ओके 50-50% मेरा ट्रेंड सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो वहां पे अगर सही ऑप्शन स्ट्रैटेजी बन गया तो दैट विल हेल्प यू स्पेसिफिकली। ओके, सो दैट इज द थिंग. So this is one of the another way to we identify a trend in the market. Okay, so this is what I teach in the option certification specifically. So logically, अगर आपको interest है इस पे, तो you guys can go to the curriculum. You can see how what are the interest, what are the the curriculum and topics we are covering in this whole session. So this will be like few changes will also be there, few technical setups will also be there in this. Okay, so that is what is the thing, right? So right now, if you see the cost of this is these for the current one. If you call your relationship manager, they might give you some offers on this, right? So if they have, right, so probably you can just go and talk to them. Okay, so or you can even contact at support at Quantsapp for the further details, right, specifically. So that is the option certification. There are people who are like much more interested in the some advanced techniques. Okay, so if you want to do that, you can go and find the if you really want to do that, so there we have the professional option trading workshop that is on 26th and 27th February. So here you are going to get like 6 or 7 option tradings based on different trading models. Okay, so you can go and find that thing. So these are the trading modules and strategy that we are going to cover in the the professional option trading. Okay, so if you're interested, you can contact your the relationship manager and they will help you in this. Okay, or you can also contact on this support, right? So that's all. So that's all from my side, guys. I hope you like the video. Please do share it with your friends and subscribe your to the option YouTube channel of the Quantsapp. Plus, if you have any query, you can ask in the comment box. I'll see and I'll reply to that thing. Okay, so thank you so much. I'll see you in the next session again. Bye and take care.